Good morning, Gajendra. How are you? Good morning, Mario. I'm doing awesome. You tell me what's All good, happening with all good, you. all great, all great. It's too much, I would say. I'm so much happy. I have been trying to, I would say, get hold of you, right? Like for this kind of discussion today, Right? right? And we have been discussing all these things over the past few months, like through our chats or conversations on LinkedIn and WhatsApp. And finally, we got you here. So, all the audience is a channel for motivational monetary fundas. And today we have Mr. Gajendra Kothari, none other than Mr. Gajendra Kothari. And the name is everyone knows about him. He needs no introduction. But just to tell a very brief about him, he's a co founder at Erica Wealth. He's a personal finance professional and a TEDx speaker. And he also promotes financial literacy wherever he can. He's having more than 20 years of work experience working in the Indian markets and overseas market. For the last 13 years, he has been running his own venture by the name of Etika Wealth Limited. He was also the VP and the head of the products at the PMS division at the UTI Mutual Fund, and also the business development head for the UK and European markets for UTI International Limited. He has been featured at multiple platforms, at multiple news platforms, channels via podcast, interviews on CNBC, Economic Times, ET Now, Z Business, and multiple other platforms as well. He was also featured in the ebook, The Top 10 Financial Planners in India by jagoadvisor.com. But most importantly, and I would say very importantly, we know him by the name of the SIP King. Right, Gajendra? You. Thank you, Mario. I think that's a very grander introduction that you've given. It's a huge shoes to fill in the kind of introduction you gave. I hope I can do the justice with whatever I've learned in the last 20 years to the questions that you answer, question that you posed to me. No, thank you so much for being here. And I really know that you shall do superb justice, right? Because you are the guy like who everyone wants to speak to and Uh-huh. like discuss about financials, about portfolio management, about financial planning, personal finance, everything. Thank you Right. so much for being here. It's completely our honor, my honor. Uh-huh. So, yeah. Yeah. Tell me. Go ahead. Yeah. So the thing is, uh, it has been like many, many years. Like I've been seeing your work like all over social media, right? Like through your LinkedIn profile and your various interviews and all. Mhm. So me, my team, and my students around, and all over, I would say, like all over India and the overseas platforms as well, they have been fascinated by one thing. Now, here I won't be asking about the SIP, right? Because that is something I'll keep it for the end. Correct. But something about you talk about the power of force compounding, Correct. right? Usually in the market, we have seen like people talking about just compounding, right? As compounding, we know is the eighth wonder of the world. Correct. So, what's the difference between the general compounding and force compounding, and how did you came about this word of force compounding? Absolutely. So brilliant question, I would say, Mario. So see, compounding, we all know the power of compounding. We all know if we can hold for long term, just sit on there, we will create huge wealth in 15, 20, 25, 30 years. But it's very easier said than done. Given the choices today, we have the distractions around us, the noise around us. It's very difficult to sit back and do nothing. I jokingly tell that we all come from monkeys, this thing, right? Our monkeys, chimpanzees, our forefathers. What is the most known trait of monkeys? They jump from here and there. They never sit quietly in a place alone. So same thing, all of investors' miseries comes from not being able to sit quietly with their portfolios. We want to try something new. We want to uh, move in and out and interrupt the power of compounding. Charlie Munger says the first rule is of compounding is not to interrupt it unnecessarily, right? But we generally, because we have 10 different kind of advisors in the form of YouTube, podcast, WhatsApp, everything is kind of an advisor today. Chat GPT has also now become an advisor, right? So we tend to listen, get swayed by these noise, and hence we do some kind of action which is counterintuitive. Now I'll give you an example. Like suppose you buy a house, and if there is a ticker in front of your house where it displays the
MRP of your house on a daily basis. You bought the house at 1 crore. After 1 year, if the MRP outside your house shows 2 CR, the listed price, what will you do? Generally, most people will say, oh my goodness, I was lucky. I bought the house at 1 CR. Now it is 2 CR. Let me sell this. I made 1 crore profit. I'll move to some cheaper house. Right. So, but because that price is not there, you never knew what was the price and you stayed there for 10, 20, 30 years. And over 30 years, of course, gradually the price has increased to such an extent that it has grown up by 20, 30x, right? You bought at 1 crore and now it might have become 2 crore, 20 crore, 25 crore. So after 25 years, people say, look, wow, this is the best investment I've done in my life. I've used this property also and it has grown multifold. So this is the power of forced compounding because you never looked at the price. There was no price available. And because it was bought for your own purpose, you stayed there. So in a way, it was a forced compounding. The residence, the house that we live is a forced compounding example. Second forced compounding example is gold that the Indian households buy. Now, generally, we gift gold to our children, at the time of the wedding. The parents gift to the daughters. Now, that is called Stri Dhan, and that is supposed to be sold as a last resort. If there is a crisis in the family, you will try to first sell your liquid assets, then you will try to sell your house, and then also you will take a loan against gold first. And finally, if you're not able to pay off the loan, then only you'll sell your gold. And that's why you see gold loans are the most popular loans in India because people don't like to sell their gold. They may want to mortgage their gold because it has significant family values. अरे मुझे शादी में दिया गया था, मेरी मदर ने, मेरी दादी माँ ने मुझे ये दिया था. How can I sell this? Worst come worst, I'll maybe mortgage it for 1-2 years and then again pay it back. So because you kept the gold for 30, 40, 50, 60 years, and even if the compounding was 9, 10% on gold, but because you kept for 50 years, you saw significant value creation. Okay. That's again a forced compounding. The last example I would like to give is PPF. 15-year lock-in. For last 40 years, our parents, grandparents said PPF is the best investment. It gives you guaranteed return by government of India. कुछ भी हो जाए, PPF को तोड़ना नहीं है. And people put money for first 15 years, then renew it for another 5 and 5 and 5. People never see the PPF accounts. And over a period of time, the PPF account has become 50 lakhs, 1 crore kind of values. Now, there is another saying in PPF says that maybe 87% of the PPF money is actually used by the nominees. Oh. Which means the person who started the PPF was supposed to be doing this PPF for his own retirement. But even in his or her retirement, that person never used the corpus. And eventually when he died, the corpus was used by his nominees only. Oh. Right? So again, because there was a lock-in of 15 years and he saw significant wealth being made in the first 15 years, it gave him motivation to continue for another 5, another 5, another 5. And hence, as a result of this forced compounding, he created his retirement corpus, which was significant. Another beautiful example is your EPF, Employees Provident Fund. Since you work at JP Morgan, I'm sure you would also have some chunk of money going in EPF or NPS, either of the two. Again, in my mind, that's again a forced compounding because you are not allowed to touch this until you retire or only on some very life emergencies like medical hospitalization or children's education, big events. So all of these are forced compounding. Unfortunately, in equities, there is nothing called forced compounding because you have a money control app. You can get in, get out whenever you want. You have open-ended mutual funds. You can get in, get out whenever you want. So the first thing that you need to sell in case of anything emergency is the mutual funds or equity stocks or anything that is liquid. And that is why compounding doesn't happen. So when I wrote this article, I said, in equities, if you can somehow get forced compounding, because otherwise it may be very difficult for me to convince Maurya that don't touch this SIP for 25 years. Mm-hmm. And there will be 1,000 occasions when you'll come and tell me, Gajendra, I want markets are going down. I'm getting nervous. Let me pull it out. But if there is any way of forced compounding wherein you can forget about it, okay, that is when you'll create the maximum wealth because equities. So we talk about real estate, we talk about gold, we talk about PPF. And these are all 3 different asset classes.
equity being the fourth. For the last 150, 200 years, equities has given the highest compounding, over a long term. So imagine if you are having equities, a good quality equities, I would say, not kachra stocks or not Not the paper Kali stocks. stock types. Yes. But if you have good quality companies in your portfolio and you are holding it for 40, 50 years, I think you will see a different kind of output altogether. So in my case, I've been lucky that whatever SIPs that I have done for the last 15 years, I've been able to self-imposed compounding or force compounding on myself. I've made up my mind कि मुझे इसको touch नहीं करना है. Luckily, when I started, I was 30 and I'm now 45, 15 years. There's been no major requirement or big requirement in my life, as in, my children are still young. So not, I didn't need to withdraw money for their very higher education. Or of course, I'm staying on rent. So I didn't need money to buy a house. So I could let this compounding work for me. Right. But this is my case. I would say, Monia, it's like one in a 100, 1% kind of a people who would be able to stick to this, because it requires tremendous amount of conviction. The reason why I could stay in this game was because of conviction and nothing else. Because when I used to read Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, they all said the same thing, Ramdev Agarwal, ki just let it there. Don't touch, don't do anything. So that is why the idea of these podcasts and session is to try and educate our people around us that it's the eighth wonder of the world. And that is why what do I do? I have a strategy, and maybe this strategy can help our viewers. I tell all the viewers, including you, I would say you should also practice that. Whenever you are starting your life's first SIP, whether it is 1,000, 5,000 or 10,000, whatever that amount is, promise yourself that you're never ever going to touch this SIP, come what may. And because it's a very small amount, 1,000, 2,000, 5,000 rupees, I hope that you never need to touch this. You can touch your other SIPs that you've started all along. So suppose the first SIP that you started was of 5,000 in life. Then your salary got increased, you started another 15,000. That 15,000 or 25,000 or 50,000, you do whatever you want. You want to break it in 2 years, 5 years, 10 years. You want to link to a different goals, do it. But the first 5,000, I don't want you to break, for the simple fact that this is the only SIP that will have a track record in your portfolio for long term. And this will become a kind of a mirror to you, showing that, look, what is the power of this? And when you are seeing this happening in your own portfolio, okay, you don't need any other validation then. When we do these kind of podcasts, many people come and say, oh, when he started, the markets were down. Many people have a lot of excuses then, because they have never seen in their portfolio happening it. They are not convinced by the stories that we may kind of come on, because it didn't happen with them. They might have started the SIP, but they stopped, and that's why they never could see the progress. So my suggestion is, if you continue, so I'll give you, so in 2010, I started 5,000 ka 2 SIP, right? That's the only SIP, Moria, which I have never touched. What do I mean by that? In all other SIPs, suppose these are the two funds where I started 5,000, and to this day, I'm doing the same 5,000, same date, same continuity, which means in each of the SIP, I put 8,65,000 per month so far in the last 15 years. In one case, which is a tax saving fund, which is a alternative to your PPF, in that case, 8,65,000 has become 34,35,000 today as we speak. Okay, you are sitting on a profit of 25.7 lakhs in that SIP, and your CAGR, even after the recent market correction, stands at almost 18%, 17.9, which is crazy. Now just compare this to PPF. PPF gives us 7.1% return versus 17.90 you have earned for the last 15 years. That is why I tell the world that in the long term, anything which is fixed income, which is debt, which is guaranteed, doesn't make sense. If you have 15-year time horizon, even the worst performing tax saving fund would give you far better return than your PPF or guaranteed return investment. Now, this is my first SIP. My second SIP, which is same 8,65,000,
In hindsight, that time I invested in a small cap, mid cap fund, and as you would have seen in the last 4-5 years, small cap has been through the roof. That 8 lakh 65 today has become 47.68 lakhs. And you're sitting on a gain of 39 lakhs, and that compounding has happened at the rate of 21.59. Okay. Now, you do the maths. So 5,000 यानी 10,000 का SIP. अभी तक मैंने कुछ लगभग 17,30,000 डाल दिया है, और आज उसका वैल्यू 80 लैक्स के ऊपर क्रॉस कर गया है. अभी इट वाज 86 लैक्स, बट मार्केट्स अभी कम हो गए हैं, तो इट इज नाउ 80 लैक्स. सो 17 लैक्स हैज टुडे बिकम 80 lakhs, and your average compounding has been in the range of 19% per annum. Right? Now, forget 19 in the future. If the compounding comes down to 15% also, imagine the kind of corpus that you're going to build in another 15 years. And by the way, each 5,000 installment that I've been putting, which started in 2010, each are now almost worth 50,000 rupees. So 15 साल लगे, 10x हो गए. Each 5,000 installment that you put in has become 50,000. Imagine, और आप 15 साल रखते हो, and if the same results come, each installment would be worth 5 lakhs. आप उस वक्त SWP कर सकते हो 5 lakhs का after 15 years. Okay? Now look at the beauty. उस वक्त मैंने 10,000 का SIP चालू किया और आज वो 80 लाख हो गया है. Imagine कीजिए, today I'm doing 30 lakhs का SIP per month. 15 साल बाद इसका क्या कॉर्पस होएगा? So this is such a powerful thing कि we are not able to visualize it also. In fact, आप मुझसे आंसर पूछो ना कि 30 लाख, जैसे अगर 10,000 का SIP करके आज कोई इंसान 80 लाख तक पहुंच सकता है 15 साल में, उसी 5,000 का SIP का टोटल करके, तो आज कोई अगर 30 लैक्स कर रहा है, तो और 15 साल बाद वो 30 लैक्स का कॉर्पस क्या होगा? बिलीव मी, मेरी भी अभी तक हिम्मत ही वो नहीं हुई कि मैंने उसको कैलकुलेट किया है क्या है, मतलब वो क्या फिगर होगा मैं खुद सोच नहीं पा रहा हूँ. Correct. But this is how maths works. No, great. तो इसीलिए आपको भी रिक्वेस्ट है, चाहे वो 1,000 रुपए का हो, चाहे 2,000 का, चाहे 5,000 का, उसको बंद मत करना. बाकी आपको जो करना है, 2 साल चलाना है, 5 साल चलाना है, 10 साल चलाना है, कोई भी फंड में चलाना आप चलाओ, बट इसको आप बंद मत करना. So Great. this is my, and one more suggestion I want to give you. Yeah. तो जो आप 1,000 2,000 का SIP करते हो ना, do it in a small cap kind of a fund. The reason why I want to tell you, because A, you are young, or all the viewers who are watching are young. 25 साल के हैं, 1,000 2,000 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. Correct. The reason why I'm telling you is that India is again a very developing nation. 25 साल बाद we are aspiring to become developed. तो इंडिया ऊपर ही जा सकती है. तो अगर आप स्मॉल कैप से मिड कैप से 25 साल पहले, 30 साल पहले इन्फोसिस स्मॉल कैप थी, राइट? HDFC बैंक स्मॉल कैप था, सब स्मॉल कैप थे. तो 30 साल में अब सब लार्ज कैप बन गए हैं. तो अगर आप स्मॉल कैप में SIP करते हो, सपोज ओवर 25 ईयर पीरियड 1% या 2% का भी अल्फा आता है ओवर लार्ज कैप और मिड कैप, सिर्फ 2% का. आई एम नॉट सेइंग कि 5% का गैप आएगा पर एनम. सपोज लॉन्ग टर्म में इंडेक्स सेंसेक्स ने 12% रिटर्न दिया है, अगर स्मॉल कैप 14 या 15 देता है, तो वो जो 3% का डिफरेंस है ना ओवर 25-30 ईयर पीरियड इज गोइंग टू बी मैसिव. मतलब ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्या होता है. मैं आपको जस्ट एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि सपोज 25 साल में 15% से अगर आपका रिटर्न आता है, तो आपका कैपिटल इट मल्टीप्लाइज बाय 33 टाइम्स 25 साल में, ठीक है ना? और अगर 17% का अगर आपका रिटर्न आता है, 2% एक्स्ट्रा, जो कोई बहुत बड़ा नहीं लगता है, तो योर कैपिटल मल्टीप्लाइज बाय 51 टाइम्स. This is the power. This is the power of 2% difference over a 25-year period. तो इसीलिए I said do small cap. उसमें उतार चढ़ाव भी होगा, because it's a smaller amount, you will ignore it. The whole idea why I want to say small cap, because I want to tell you the power कि long term में 1% ऊपर रिटर्न आता है ना, तो it can be a game changer in your portfolio. Correct. So this is my insight which I've learned from the last 15 years. No, completely agreeing with your points. And there are a series of additional points that you also discussed with us. I'm really sure that will really help our audience too. And a few takeaways, like what I could make out from the forced compounding was something it generally works in a much better way for less liquid assets. As for now, maybe like we talked about the real estate, PPF, EPF, and gold, right? And
as we talked about, it's very difficult for everybody to continue their SIP journey, right? Hmm. They might get lured by some fascinations, right? They might have some their own demands for luxuries, for like some kind of different items, and they might stop their SIP, and that is something which is extremely wrong, right? Because we talk about the returns over the long term period, right? And whenever we are talking about the power of compounding, and like we're trying to talk about this R component, right, in the formula for the future value, I believe, as per like your conversation also, that time component is also very important, right? We should not just kind of neglect this component of time, because time is something that shows your persistency, how much you are into the game. तुम लगे रहे हो, like you have done the SIP continuously, and that has given you enormous return over that particular period of time, right? For all the newbies like who are starting their journey, right? Because like what happens now, they try to do their SIP, they start from 1K, 2K, 3K, right? They start their first job, salary आने से पहले ही they get their iPhones or like some kind of luxury stuff and all, right? They book their iPhones on EMIs, right? What I personally believe is that EMI should be converted to SIPs, right? And that's a productive one. Salary तो पहले आने दो यार, जॉब में 1 साल 2 साल 3 साल निकाल तो लो. It's not bad to purchase iPhone now. Like we can debate between a business work and personal work, so like that's something out of the box. But at least start doing an SIP consistently. I remember that I began the SIP when I attained the age of 18 years, right? And from that particular point of time, as you also told, right, SIP छोड़नी नहीं है. अपना वो जो SIP monthly जा रहा है वो छोड़ना नहीं है. And the once I started to earn also, right, my first salary came into place. Now like it has been around like 4 or 5 years I've been working into a company. The thing is, the first my salary comes into place, the first thing I do is my SIP. All Correct. my EMIs, all my kinds of XYZ stuff, my rent, my groceries, it's only after the SIP. SIP is mandatory. वो मुझे निकालनी ही नहीं है, वो पैसा लगा रहेगा, लगा रहेगा. Correct. So that is something which I also insist, and especially like you are insisting for all the audience, like coming out from like so much experience, like into this field and having like so much fascinating thoughts. So that's really good. So our audience, SIP शुरू करो. SIP शुरू करने की कोई देरी नहीं होती. Just begin with the SIP, like be persistent and focus both towards that R component of the return and time period that shows your consistency and persistence for long-term returns. So that's the takeaway we can take in from our first part of discussion. So, taking the discussion forward, so generally, we have seen that especially the college-going people, right, or the people like who have just passed out of college, they want to become rich, early rich, right? And the major drawback that they face is like becoming rich is not bad, but उनको जल्दी पैसा कमाना है, बहुत जल्दी अमीर बनना है, in a 1 month, in a 2 month span, and 3 month span. And what do? They tend to lure themselves to some quick money making schemes, join some Telegram groups kind of stuff, right? Some kind of like short term communities where they tend to talk about some stock, some penny stock. The stock goes up, they make returns, and sometimes they're completely out of the market. Stock गिर जाता है, stock खराब हो जाता है, तो short term में पैसा कमाया, the people tend to lose it. And they also tend to like lure people to like some kinds of pyramid schemes and all that kind of stuff, right? Because they're focusing towards कि आप skill पे focus मत करो, आप group join कर लो हमारा, आप seminars join कर लो हमारे, like we'll try to make you rich. The thing is, I'll take this question ahead. The thing is, there is always a difference between being rich and wealthy, right? Rich is something which can be short term. A quick money making scheme can make you rich. But wealthy is something which I believe that when you know that entire story behind a particular thing, you get that knowledge, ये चीज क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही, you do some research and get into that stuff, you tend to become wealthy, right? So taking this to mutual funds, can mutual funds really make us wealthy, or like will they just make us rich? So see, as you rightly said, when we are young, 22, 24, 25, and we have recently started our earnings, 25,000 a month, 50,000 a month, 1 lakh a month. Now, this is the first time we are receiving this large chunk of money in our life. And this is the first time मतलब अपने को लगता है अपने भगवान है. अपने को किसी को आंसर नहीं करना है. Even our parents can't ask us now for the first time in our life. नहीं तो आज तक लाइफ में आपने स्कूल में पैसे चाहिए थे पेरेंट्स से लिए, कॉलेज में चाहिए थे पेरेंट्स से लिए, एमबीए कर रहे हो तो भी पेरेंट्स से पैसे मंगा रहे हो बिकॉज यू हैड नो इनकम ऑफ योर्स. आपको हर बार मांगना पड़ता है एंड नोबडी लाइक्स टू आस्क मनी इवन फ्रॉम योर पेरेंट्स. फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गेटिंग 50,000 चेक और money in your account. You feel really supreme. You feel wow, this is amazing. And आपको समझ में नहीं आता मैं करूं क्या, राइट? एंड दैट्स व्हाई लोगों को लगता है कि अरे मैं आईफोन खरीदूं बिकॉज
अब मुझे किसी से पूछना नहीं है, मेरे फ्रेंड्स खरीद रहे हैं, एंड यू सी अराउंड क्या होता है, आपके दोस्त लोग सब वही कर रहे हैं, बिकॉज ईच ऑफ वन ऑफ अस आर ह्यूमन बींग्स, राइट? Correct. तो कोई कोई हॉलीडे पे जा रहा है, कोई जिम मेंबरशिप ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो आपको भी लगता है यार चलो मैं भी करता हूँ। बहुत कम लोग ये बोलते हैं कि अरे मैं एसआईपी कर रहा हूँ इसका, क्योंकि इतनी लिटरेसी नहीं है उतनी। तो सब लोग खर्चे की बात करते हैं, सेविंग की बात कोई नहीं करता है, बहुत कम लोग करते हैं। हम्म, ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, आई मीन आपने आया तो खर्चा करना भी चाहिए, बट आपको बैलेंस बना के चलना चाहिए, राइट? आज 25 के हो तो यस, आई वांट यू टू बाय हार्ली डेविडसन ऑल्सो इफ यूर अ बाइक फैन। I want you to buy Apple Watch if you're a tech gadget fan. Okay, I want you to travel the world if you're a trekker and मतलब go for Everest base camp वगैरह वगैरह। क्योंकि आज नहीं करोगे तो कब करोगे आप? right. तो एक बैलेंस बना के चलो कि जो चीज आपको अच्छी लगती है लाइफ में। देखो, आप ये नहीं बोल सकते मुझे सारी चीजें अच्छी लगती है, मैं पार्टीज भी करने जाऊंगा, मेरे को अच्छे कपड़े भी खरीदने हैं, अच्छे जूते भी खरीदने हैं, राइट? मैं कोल्ड प्ले भी देखने जाऊंगा। तो बस आप यू हैव टू बी देन अ बिलियनर सन और डॉटर, राइट? हम्म, बट अगर वो नहीं है तो देन यू टू प्रायोरिटाइज। हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, तो यू प्रायोरिटाइज व्हाट आर द नॉन नेगोशिएबल आइटम्स इन योर लाइफ एंड व्हाट आर द नेगोशिएबल, तो एंड एंड देन प्लान। तो अगर आप करते हो तो मे बी वेन यू आर यंग, ठीक है, मैं आपको 50% सेविंग करने नहीं बोलूंगा, अगर 10-20% कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको 1,000, 2,000, 5,000 एसआईपी की बात की। अगर 18 साल में कोई 1,000 रुपए की एसआईपी करता है और बाकी सब बंद कर देता है ना, तो खाली उसको वो 1,000 रुपए की एसआईपी उसकी लाइफ की टीचर बन जाएगी। देखो तुमने खुद ने क्या गलती की, बाकी एसआईपी नहीं चालू करके ये बंद करके। तो अगर वो आप कर पाते हो तो है, बट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है मौर्य, हम्म, फास्ट वेल्थ कभी नहीं बनेगी आपकी। ओके, अगर आप लकीली 3-4 साल में जिन्होंने फास्ट वेल्थ बनते देखा है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी, वो वो वापस मार्केट उनसे लेके जाएगी, ये हम्म, गारंटेड है। ओके, क्योंकि क्योंकि नाउ अगर जिन्होंने 4 साल में एसआईपी चालू की और उन्होंने 20% प्लस सीएजीआर दिखा है, लॉन्ग टर्म में मार्केट 20% नहीं देता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट वापस घूम फिर के 12-13 पे आ जाता है। तो जब ये जाते दिखेगा ना आप आपके पोर्टफोलियो से, तब आप नर्वस हो जाओगे, और नर्वस होगे तो आप कुछ गलत कदम उठाओगे, राइट? गलत कदम उठाने से मिस्टेक होगा, और फिर आपका कन्विक्शन खत्म हो जाएगा। फिर सो बेसिकली घूम फिर के जब 100 लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे साइकिल में, ले दे के 10 लोग ही कंटिन्यू कर पाते हैं, 90 लोग साफ हो जाते हैं, correct, correct. राइट? तो वो मार्केट सबको अपना लेसन सिखाती है, विच इज अ एवोल्यूशन, जैसे चार्ल्स डार्विन कहते हैं ना, इट इज एवोल्यूशन। तो बट वो जो 2-10 लोग बच जाएंगे ना, वो लोग वेल्थ बनाएंगे। और वेल्थ म्यूचुअल फंड में बनती है, 100% बनती है, पर टाइम देना पड़ता है। तो जो टाइम कंपोनेंट है कंपाउंडिंग का, उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आर हमारे हाथ में नहीं है, राइट? और प्रिंसिपल जो आप डाल सकते हो वो आपके हाथ में है। सो मैं हमेशा कहता हूँ आपके हाथ में दो वेरिएबल है, हम्म, पी कितना आप डाल सकते हो पर मंथ या लमसम, और टी कितने लंबे टाइम के लिए डाल सकते हो। आर आपके हाथ में नहीं है, हम्म, बट हाँ अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तो मार्केट्स आर भी आपको देगा, हम्म, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, आपको रिवॉर्ड करेगा मार्केट्स। तो चूंकि मैंने 15 साल आई ट्राई टू बिहेव राइट, सो फार आई अर्न अराउंड 18% कंपाउंडिंग रिटर्न। इनफैक्ट महीना भर पहले ये 20-21% था, बट अभी करेक्शन हो गया तो 18 है। मेरा एक्सपेक्टेशन 15% था कि अगर 15 भी आ जाए तो आई एम वेरी हैप्पी। अभी तक 3% एक्स्ट्रा पे चल रहे हैं, तो देखते हैं कितना कितना दिन चल पाता है। बट यू हैव टू बिहेव राइट। सो ये तीन कंपोनेंट अगर एकदम हाईएस्ट लीवर पे काम कर सकते हैं, प्रिंसिपल कितना आपने डाला, रिटर्न कितना लंबा आया, कितना ज्यादा आया, और टाइम कितना लंबा, हम्म, इन तीनों का जो कॉकटेल होगा ना, दैट विल पुट यू ऑन टू अ डिफरेंट ऑर्बिट ऑल टुगेदर। सो सो correct, correct. इट्स अ मिक्स ऑफ पेशेंस, विजडम, डिसिप्लिन, सब कुछ बोल दो आप। नहीं, ग्रेट पॉइंट्स, ग्रेट पॉइंट्स, लाइक सो आई कंप्लीटली एग्रीइंग। कितना अमाउंट हमें मार्केट में डालना है, द अमाउंट ऑफ कॉपर्स दैट वी नीड टू पुट इन द मार्केट एंड टाइम इज इनटू आवर हैंड्स, राइट? करेक्ट, बट रिटर्न इज समथिंग वी माइट हैव टू स्ट्रगल समटाइम्स, यस, right? But again, that long-term component and knowing the entire story is something that can really help us out. So guys, all the young bees who are just looking like towards our discussions and like watching our podcast, I would just suggest everyone to focus upon upskilling and skill building and not go towards this short-term like money-making schemes. You might have interest into some kinds of luxuries, as I also told, right? You might be a fan of a watch or a bike or something else, but you can't be a fan of everything. And stop comparing yourself with the other people in the market. Someone might have a higher salary, your peer might have a higher salary, like you might not have a higher salary. You might reach to that point at a particular point of time in future later. But comparison is something which is not so good.
कि अगर मुझे वहां भी जाना है, मेरा दोस्त वहां जा रहा है, तो मुझे भी वहां पे जाना है, रोज पार्टीज करनी है, रोज लग्जरी आइटम्स लेने हैं, देयर हैज टू बी वन लिमिट, एंड यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस आउट ऑफ योर थिंग्स towards savings, which need to be channelized towards investments in the form of the SIPs, right? And having a balance towards the other luxury things. Travel करना बंद नहीं करना, like चीजें खरीदना बंद नहीं करना, but you need to have a balance of the stuff, and that is the takeaway that we can take. Okay, so like currently, a lot of people in the market, they talk about price corrections and time corrections, Correct. right? So could you please elaborate the difference between price corrections and time corrections in the current scenario? सो सिंपल है। Hmm. कोविड में जो हमने देखा 2 महीने में Mhm. मार्केट्स 40% टूट गए थे, दैट वाज Correct. प्राइस करेक्शन। इंडेक्स जो भी आप देखो 42,000 का सेंसेक्स था, इट केम टू 26,000 का सेंसेक्स, फटाफट गिर गया, तो प्राइस करेक्शन था। टाइम करेक्शन कब होता है? जब 6 महीने 12 महीने साल भर तक इंडेक्स वहीं का वहीं रहता है, ऊपर जाता नीचे आता वहीं का वहीं रहता है, कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं। लास्ट 6 महीने में जनरली ये टाइम करेक्शन हुआ है, रिटर्न Hmm. हार्डली 3-4% आए हैं, बट कुछ बढ़ा नहीं है। तो ये मार्केट में दो तरह के करेक्शन हो सकते हैं, कि प्राइस करेक्शन और टाइम। बट टाइम में प्राइस करेक्शन लोगों को बहुत नर्वस कर देता है, टाइम करेक्शन इतना नर्वस नहीं करता है, क्योंकि टाइम में कम से कम आपने जो डाला वो नीचे नहीं आया। Correct. Correct. नीचे नहीं आया तो आप इसलिए बैठ सकते हो ज्यादा। प्राइस करेक्शन में आ रहे आपने 100 रुपये डाला और 70 रुपये आ गए, तो आप अब आपको क्या करना है? Hmm. राइट। कोविड में लेकिन जो प्राइस करेक्शन आया था बहुत शैलो था, मतलब बहुत फटाफट वापस ऊपर आ गया था। अगर वो 6 महीना और रुक जाता ना, तो फिर वो प्राइस और टाइम करेक्शन दोनों हो जाता, 6 महीना 12 महीना रुक जाता। तो प्राइस और टाइम करेक्शन दोनों एक साथ अगर हो, इट कैन बी डेडली। तो Hmm. अगर आज की डेट में मैं समझता हूँ कि यहाँ से अगर 20% होते हैं, आई डोंट नो, मतलब मैं तो जस्ट एक थियोरेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ से और 20% होते हैं और 2 साल मार्केट कहीं नहीं जाता है, 80% पीपल जो यहाँ है मार्केट से निकल जाएंगे। Hmm. 80 to 90% पीपल विल गो अवे, बिकॉज ये उनके लिए लाइफ, फॉर गुड 80% ऑफ द पीपल दिस विल बी फर्स्ट मेजर करेक्शन। देन 2 साल कुछ नहीं चला, 20-30% डाउन है, तो लोगों का कन्विक्शन खत्म हो जाएगा, और जो बच गए जो रह गए वो बहुत पैसा बना लेंगे। Hmm. तो नाउ एज एज एन SIP इन्वेस्टर, आई वुड लाइक बोथ प्राइस एंड टाइम करेक्शन टू हैपन। मैं चाहूंगा कि ये हो। एंड Hmm. अगेन आई वुड प्रे फॉर यू, फॉर पीपल इन योर एज ग्रुप जो अभी 25-30 साल के हैं, जिनको 15 साल चलाना है। आप तो भगवान से प्रार्थना करो कि जितना प्राइस और टाइम करेक्शन हो सके हो, क्योंकि आप उतना ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहे हो। Correct. Correct. आपको करंट पोर्टफोलियो नहीं देखना है, आपको Hmm. मार्क टू मार्केट नहीं देखना, आपको बस ये देखना है कि मैंने कितने यूनिट्स हर महीने खरीद पाया हूं मैं। Correct. अगर आप अपना मेट्रिक चेंज कर ले हो फ्रॉम वैल्यूएशन टू यूनिट्स, यू विल नॉट गेट स्ट्रेस्ड आउट। ओके। और बी, अगर आपने ये मतलब 10 साल 5 साल जो भी है टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन आपने बहुत इकट्ठा कर लिया, उसके बाद जो आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, विल बी एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। Correct. 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 तो बट ये बातें करना बहुत इजी है, जब रियल लाइफ में होता है, पर्टिकुलरली इफ यू आर नॉट हैविंग एनी एडवाइस, किसी से आपको एडवाइस नहीं है, तो फिर खुद से हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता No, agreed, agreed. And for that, we have you here, है। right? Like, so that the audience feel like much more motivated because the market गिरती है ना, like when the market falls, लोग घबरा जाते हैं। यस, अरे मार्केट गिर गई, अगर और गिर गई तो पता नहीं क्या होगा, and they tend to like एब्सोल्युटली, sell off their units, right? So एब्सोल्युटली, focusing towards units, yeah, I like to be called as rupee cost averaging, right? So like that thing is much more essential, I would say, instead of just thinking कि चलो भाई मार्केट गिर रही है। प्रोवाइडेड अगर आपने बहुत ही घटिया स्टॉक्स लिए हुए हैं, लाइक पेनी स्टॉक्स, XYZ काइंड ऑफ स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, देन तो आपको डरना है। करेक्ट, ये, But if you're having the whole story and like all that knowledge, again, यस, that is something you can be like very much motivated, and you can be patient towards getting that extra alpha, right, in यस, the long term. एब्सोल्युटली, Very well covered, very well covered. So one question like which is like trendy nowadays, like everyone has been talking about the large cap space, the mid cap space, and the small cap space, right? And like over the previous years, we have seen small cap and mid cap give enormous returns, like beating the large caps per se, right? But this year, like if we talk about the further year of like 2025, they say like it's a time for large caps, right? The same thing, a lot of fund managers and portfolio managers have been suggesting to sell off the mid caps and large caps in the previous years also, right? When they became overvalued based upon the price to earning ratio, करेक्ट, right? But still, those fund managers who held those small cap and mid cap stocks, like good quality small cap and mid cap stocks, they were able to beat the other fund managers having that extra alpha. Market बोल रही बेचो बेचो, like, but they still had it.
Like maybe Correct. we're focusing towards the PEG ratio and not the price to earning ratio. Right? But the thing is, what's your view upon the large cap, mid cap, and small cap space, and which to go for, like in terms of percentage allocation, like for our viewers in 2025? Exactly. So see, personally, I'm a very aggressive investor. I've always been that. So in my portfolio, family's portfolio, we have around mid and small cap uh, around 60%. Remaining 40 is large cap, okay, in terms of market cap. And again, even in that portfolio, most of them is sectoral or thematic uh, kind of thing. We have taken high risk because we understand. But uh, generally, I would say when you are young and if you can take a lot of risk early part in your career. I mean, see, when I say risk, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं कर रहे हो तब तो रिस्क है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक्स में ठीक है, आपने स्मॉल कैप लिया, एसएमई आईपीओ में लगाया, वो जीरो हो सकता है, एकदम टूट सकता है। बट आपने मिड स्मॉल कैप फंड में डाला, मिड कैप फंड में डाला, तो 50 कंपनीज का पोर्टफोलियो है, वो कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, आपने 100 डाला, इट कैन गो डाउन टू 70, 80, 50, बट अगर आप इफ यू कैन होल्ड एंड यू डोंट विड्रॉ योर मनी एट रॉन्ग टाइम, यू विल नेवर हैव परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। द ओनली थिंग ऑफ कोर्स यू विल हैव स्ट्रेस, लॉट ऑफ स्ट्रेस कि आपका पैसा टूट रहा है। तो ये बात है। सो यंग में अगर आपका लार्ज स्मॉल कैप है तो है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द वैल्यूएशंस। हर मार्केट साइकिल जब जब स्टार्ट होता है ना, तो मान लो तीनों एक पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल, सबका बेस 100 होता है सपोज। और जब मार्केट अच्छे टाइम पे जा रहा होता है ना, तो स्मॉल और मिड बहुत ऊपर जाते हैं, और वो डाइवर्जेंस आ जाता है स्मॉल, मिड और लार्ज के बीच में, राइट। और मार्केट परमानेंटली तो ऊपर नहीं जा सकते हैं, 4 5 साल अच्छा रन रहा, देन सैचुरेशन एंड देन फॉल। तो जब फॉल होता है ना, तो जो जितना ऊपर गया था वो उतना नीचे तेजी से भी आएगा। ओके। और जब मार्केट्स एकदम, इकोनॉमी की हालत एकदम खराब रहती है एकदम, तो वापस वो तीनों कन्वर्ज हो जाते हैं, लार्ज, मिड, स्मॉल। ये हमने 3 4 बार होते देखा है इन द लास्ट 20 ईयर्स। हाँ, वो 20 years. तीनों ने 100 का बेस से स्टार्ट किया था, बीच में बहुत डाइवर्जेंस आ गया था, फिर वापस 100 पे आ गए, फिर वापस बहुत गए। आज के डेट में स्मॉल, मिड और लार्ज में बहुत डाइवर्जेंस है, मतलब स्मॉल और मिड काफी ऊपर है, लार्ज उतना नहीं है। तो और 4 5 साल हो गए कोविड के बाद से हम ये देख रहे हैं, तो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि एक इस साल या अगले साल आएगा, वो गैप आएगा। दो चीजें हो सकती है मौर्य, या तो मार्केट्स कंटिन्यू टू गो अप, तो लार्ज कैप विल कैच अप विद मिड एंड स्मॉल कैप, उनको बराबर आना पड़ेगा, या फिर स्मॉल एंड मिड कैप हैज टू फॉल डाउन। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन कोई नहीं है। ओनली टाइम विल टेल कि क्या होता है। बट ऑफ कोर्स आज अगर पैसा डालना है तो लार्ज कैप हैज अ मोर मेरिट, नया पैसा किसी को डालना है तो हैज अ मोर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, विच इज व्हाट आई ऑलवेज टेल। हैविंग सेड दैट, मेरा जो एसआईपी जा रहा है स्मॉल एंड मिड कैप में, वो कंटिन्यू रख रहा हूँ, आई एम नॉट स्टॉपिंग दैट एंड स्टार्टिंग न्यू एसआईपी। हम हर अप्रैल में नई एसआईपी चालू करते हैं। ओके, जनरली हम जो भी बढ़ानी है कुछ भी, तो हम अप्रैल में देखेंगे कि उस वक्त क्या अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमें कहाँ एसआईपी ऐड करनी है। तो दैट इज वन। सेकेंडली, ये जो हमने अभी तक आज तक किया है और जो गेन्स बनाए हैं, 90% टाइम हम लोग उसको विड्रॉ नहीं करते हैं, बिकॉज जब तक हमें नहीं लगता है कि स्मॉल कैप इज इन द बबल टेरिटरी। स्मॉल कैप इज मोर एक्सपेंसिव देन मिड कैप एंड लार्ज कैप, बट इट इज सर्टेनली नॉट इन द बबल टेरिटरी। वी हैव आवर ओन वेज टू थिंक कि बबल क्या है। तो जब हमें लगेगा कि कुछ स्पेस स्मॉल कैप में या कहीं थीमेटिक में बबल आ गया है, then we'll book profits from there and deploy it in areas where it has not really performed well, right? But generally that opportunity arises only 10% of the time. तो जैसे इफ यू आस्क मी, 2010 से मैं स्मॉल कैप में डाल रहा हूँ, आज तक मुझे स्मॉल कैप से निकालने का मौका नहीं मिला है। इन हाइंडसाइट मैं 2018 जनवरी में निकाल सकता था, बट वहां उस वक्त गलती कर दी। अगर उस वक्त निकाल लेता तो बहुत फायदा हो जाता, बट उस वक्त समझ में नहीं थी तो नहीं निकाला, बट उसके बाद अभी तक वो मौका नहीं मिला है। सो मे बी अगर सडनली यहाँ से इस साल 2025 में भी स्मॉल कैप मान लो 25% और रैली कर जाते हैं, एंड इफ आई फील कि बस दिस इज नाउ लुकिंग लाइक ए बबल, देन आई विड्रॉ अ गुड चंक ऑफ मनी फ्रॉम स्मॉल कैप एंड डिप्लॉय इट इन लार्ज कैप और समथिंग एल्स। तो सो 2025 में आई बिलीव ऑफ कोर्स लार्ज कैप्स आर बेटर वैल्यूड। अगर टाइम करेक्शन होता है, मार्केट नीचे भी जाता है, तो लार्ज कैप्स विल फॉल मच लेसर। ओके, एंड बट आपके जो स्मॉल कैप्स में डाले हुए हैं पैसे, वो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, यू डोंट हैव टू रिडीम, you don't have to book profits out of that. That would be my advice. Very well covered, because at some point of time the mean reversion has to take place, like in totality, like be it from the It large is cap side or the mid cap, small cap it side. is the nature of the market. अब वो Correct. देखो, nobody can go right on timing.
हो सकता है हम सब 25 में वेट कर रहे हैं, 25 में भी एक तरफा ही स्मॉल कैप ऊपर भागे, हो सकता है। करेक्ट तो करेक्ट। मार्केट्स कैन स्टे इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन स्टे सॉल्वेंट। मार्केट्स का एक नियम है, इफ यू हैव पर्टिकुलरली बीन पंटिंग ऑन एफ एंड ओ लेवरेज, राइट, और आपको लगता है यार ये मार्केट सही नहीं है, ऐसा होएगा, हम्म। मार्केट आपकी नहीं सुनता है। मार्केट्स, एज ए सेड ना, मार्केट्स कैन स्टे इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। अगर आपने बोरो किया है, आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे, बट मार्केट कैन स्टिल स्टे इरेशनल। तो इसीलिए आपने अगर फंड्स बाय किए हैं, आपने नॉर्मल स्टॉक्स बाय किए हैं, देन यू हैव द पेशेंस, यू कैन होल्ड, राइट, आपने बोरो नहीं किया है। तो अगर इस साल भी मार्केट स्मॉल के 25% जाता है, देन इट इज क्वाइट पॉसिबल, डोंट बी सरप्राइज कि अरे ये क्या हो रहा है। करेक्ट करेक्ट। शॉर्ट टर्म में मार्केट्स कैन डू एनी काइंड ऑफ एक्शन, और आपके और मेरे समझ के बिल्कुल बाहर हो सकता है। Correct, correct, correct. Because one thing I was looking forward, like in a few of the past days, I was just capturing the ratio, right, between the mid cap to large cap or the small cap to large cap, right? So that was something like which was extremely high, like over the past years, like if we tend to talk about, and that indicates the 3 to 4 year cycle for the small cap and mid cap. Yes. And we have been like around like 2.5 years or so, like in that cycle, or 3 years max to max. So at least we Right. can see like 1.5 years to 1 year, we can still get that extra alpha out of the small cap and mid cap from that thing. But again, that might not always work, I believe. It's just a kind of calculation and all, because past performance is not always the future हाँ हाँ, indicator. सो जो आप जो थिंकिंग करे वो राइट है, बट कब प्ले आउट होगी वो किसी को नहीं The पता। payout of the correct, correct, correct. Agreeing with your points. Okay, so the thing is, we have been seeing huge FIs outflows in the market, right? We have been seeing Mr. Trump like getting back to the seat once again, right? Correct. We had some expectations of inflation. The 10-year Correct. curve, it rose at 4.6, 4.7. So that kind of inflation expectation, like it was trying to price in the US dollar being all-time high around like 109, 108 point something like to the last initials. And all these emerging markets outflows, like we can see, like especially from India going to US, right? Last year, we have seen like YTD return, like if we talk about Nifty, like around 8% or so, like US giving around like 27% or so. People talking about the US market being overvaluation, bubble territory. So what do you believe that at what point of time? I know like trying to guess the exact time is like quite impossible for everybody, but approximately like when can we see the money getting back to the markets like India, like emerging markets like India? Because US markets seem sheerly overvalued, being like 50 to 60% overvaluation based upon price to earning multiple past 10 years का. So when can we see that? नो अगेन अ गुड क्वेश्चन, आई हैव आल्सो बीन होपिंग कि कभी यूएस में मार्केट्स करेक्ट हो, बट यूएस मार्केट्स समहाउ लास्ट 15 साल हो गए, पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 से लेके 17 साल हो गए, मार्केट्स, यूएस मार्केट्स हैव डन फिनोमिनली वेल। और मैं भी कब से वेट कर रहा हूँ, इसलिए मेरा भी आज के डेट में आई हैव नो एक्सपोजर एनीथिंग इन यूएस फंड्स, यूएस स्टॉक्स और यूएस फंड्स। बट अगेन एज आई सेड ना, मार्केट्स कैन स्टे इरेशनल और व्हाटएवर इन एनी डायरेक्शन। जनरली पहले ये माना जाता था कि मान लो 10 साल इमर्जिंग मार्केट्स का टाइम है, 10 साल, सो 2000 टू 2010 अंटिल लेट इमर्जिंग मार्केट्स डिड वेरी वेल, यूएस मार्केट्स डिड वेरी बैडली। 97 से लेके 2007 तक यूएस मार्केट्स डिड वेरी बैडली। 2008 से लेके अभी तक यूएस मार्केट हैज डन वेल, इमर्जिंग मार्केट्स बारिंग इंडिया हैज डन पैथेटिक। आप सारे इमर्जिंग मार्केट्स ले लो, चाइना से लेके, इट हैज बीन पैथेटिक। नाउ ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग ट्रम्प आया तो अगेन यूएस मार्केट शुड कंटिन्यू डू वेल, बट ऐसा नहीं होता है सर, नॉट नेसेसरी। ये सब हम लोग को नैरेटिव इजी लगता है कि अभी आ गया तो, बट किसी के हाथ में नहीं है, राइट। वी हैव सीन बेस्ट, जब बेस्ट ऑफ टाइम्स आते हैं तो उल्टा मार्केट्स खराब करता है। वी हैव सीन, हम लोग जो वर्स्ट प्रेडिक्शन करते हैं कि अरे अब ये आ गया तो ऐसा हो जाएगा, एंड मार्केट सडनली डू द रिवर्स। तो एटलीस्ट आई एम विथ यू ऑन द फैक्ट कि इट इज एक्सपेंसिव, सो मुझे यहाँ से ज्यादा स्कोप नहीं लग रहा बढ़ने का पर्सनली। अगेन वी बोथ कैन बी प्रूवन रॉन्ग, मार्केट्स विन मार्केट्स, बट क्या होता है देखो, आई ऑलवेज गो विथ समथिंग कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉजिक। आप कितना रिस्क ले रहे हो, उसका अगेंस्ट में क्या रिवॉर्ड मिल रहा है। तो यूएस मुझे पैसा में लग रहा है कि रिस्क इज हायर, रिवॉर्ड इज लोअर कंपेरेटिवली। इंडिया में मुझे लगता है रिस्क इज लोअर, रिवॉर्ड इज हायर ओवर द नेक्स्ट 5-7 years। सो आई वुड लाइक टू बेट माई मनी ऑन इंडिया। ऑफ कोर्स एफ ने पैसा निकाला है, एफ के अपने रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देयर द यील्ड इज 5%, और उनको लगता है 5% अगर वहां मिल रही तो मैं क्यों यहाँ दिमाग लगाऊं। Correct. और उन्होंने इसीलिए लेफ्ट राइट सेंटर सब मार्केट से पैसा निकाला है, इंडिया में बहुत था तो इंडिया से भी निकाला है।
बट कभी ना कभी मुझे लगता है एफआई वापस आएंगे, राइट? दे हैव नो चॉइस। अगर लॉन्ग टर्म में इंडिया अच्छा करेगी, दे हैव नो चॉइस बट टू कम बैक। तो जिस दिन वो आएंगे उससे अच्छा अपने लोग पहले ही लोड एंड अप रहेंगे, तो यू विल सी मेगा बूम देन। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने पैसा लार्ज कैप से ही निकाला है, सारा पैसा। स्मॉल कैप्स में तो उनका बहुत कम था, तो लार्ज कैप से निकाला। तो जब वो आएंगे तो ऑफ कोर्स लार्ज कैप्स खरीदेंगे। तो इसीलिए आज की डेट में, जैसे हमने डिस्कस किया पहले, कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज फेवरेबल इन लार्ज कैप्स टुडे। तो इट इज अगेन साइकिल, राइट? एवरीथिंग इज साइकिल। तो तो आई वुड bet my money on India and not on US at given point of time. No, correct, correct. As also like we can see the spread between the yields, like the US yields and the India 10 years yields is Correct. compressing, right? Like Yes. historically, like it has been quite widened, Right. Yes. but like over the first time, like I would say, like over the previous years, the spread has Correct. been compressing and like Yes. all time tied Yes. to like in the US and Indian markets. Yes. And the story is also like quite vice versa. Like we talk about the small caps and the mid caps being overvalued here, right? Right. So like, but the story is quite vice versa in US. Like Correct. small caps and mid caps are people tend to say like much more good to go for like in terms of investing, and large Yes. cap with the vice versa, right? The magnificent seven, the top seven companies, Correct. and vice versa being playing in India, right? Correct. So my last question to you, and that is something which you will like quite relate also. Like many people tend to ask you, right? It might have become like one of your favorite questions in the current scenarios, right? The thing is like you are investing like 30 lakhs currently, like per month, right? So the question is something like which can be my personal question too for you. And it can, and it's also like the people want to ask you, like in my community and like people all around, like in the world. Do you expect to increase it from 30 lakh to some other amounts per month in the near future? Like, which I'm sure that you will. If not, then why? If yes, then like what amount like you are expecting? And the second thing is, like you told me that you live in a rented house, right? And like you have been like talking about the same, like why not own a own house and go for a rental one? Like these two questions for you, if you can just elaborate upon the same. No, see, SIP increment is a natural progression, because if you believe in the power of compounding and if you have a good active income coming in, right? Why not? So as I told you, like last 6 months, we God has been kind. We've been working very hard. Saturday, Sundays को भी, आज ये podcast हम Sunday को कर रहे हैं, right? If I wanted, I could have chilled. And ठीक है, you should chill also, no doubt. But if work is play for you, if you enjoy doing work, then सातों दिन भी कोई फर्क नहीं पड़ता. And particularly when you're doing for yourself, this is a startup or entrepreneurship for me. And if you work hard, you will be rewarded. It's a no-brainer, right? Right. Uh, because when people go extra mile, that the kind of recognition or everything, comes with that extra effort that you've taken. So of course, income will be better, hopefully, and our income is completely dependent on market income. मतलब मार्केट्स कैसे फंक्शन करते हैं. अगर मार्केट्स अच्छे होंगे तो सबकी इनकम अच्छी होगी, मार्केट्स खराब होंगे तो हमारी इनकम को भी इफेक्ट करेगा. तो वी हैव नॉट मच चॉइस इन दैट केस. तो अगर मार्केट्स अच्छे रहेगी तो ऑफ कोर्स वी वुड लाइक टू इंक्रीज आवर एसआईपी एज वी हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 15 years. See, the only good thing which we have done in the last 15 is kept on increasing the SIPs. दिमाग नहीं लगाया कि अरे मार्केट हाई है, लो है. तो इस अप्रैल में भी वैसा ही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे. इतना करना है वो ऑफ कोर्स हम लोग मार्च में 20 से 10 डिसाइड की क्या इनकम है और उसके हिसाब से क्या कंफर्टेबल रहेगा. एटलीस्ट 15-20% हैज बीन द ट्रेंड ओवर द इयर्स. तो वो करना है. सो दैट इज है. सेकेंडली, हाउस खरीदने का जो है, एटलीस्ट नेक्स्ट 5 years तो नहीं लग रहा है, अंटिल यू बिकम 1 idiot, जो आपका सपना था 100 crores एंड रोल्स रॉयस. उसके बाद देखेंगे. आई मीन, आई एम नॉट वेरी फसी अबाउट इट, और आई एम नॉट, एटलीस्ट मी, माई वाइफ, माई फैमिली इज नॉट वेरी इंटू इट कि खरीदना ही है. बिकॉज हम 15-20 साल से अब रेंट पे रह रहे हैं, तो आदत है. सी, क्या होता है, देखो, आप कब खरीदने जाते हो, सडनली व्हेन यू हैव अ बैड एक्सपीरियंस इन अ रेंटल हाउस, you know why people end up buying a house in many cases is when they have a bad experience. I'll tell you a couple of examples. मेरे एक फ्रेंड है, बहुत अच्छे मित्र है, जिन्होंने बहुत सारा पैसा इक्विटी में डाला है. एंड डायरेक्ट स्टॉक्स में ही हैज मेड इनफ अमाउंट ऑफ मनी. ओके. एंड उनकी आज की डेट में अच्छी इनकम भी आ रही है, सब कुछ अच्छा है. एंड ऑल इज लाइफ इज लिव्ड इन रेंटल हाउस, ऑल इज लाइफ.
बट लास्ट 4-5 साल से उनको हर 2-3 साल में जब चेंज करना पड़ा, फॉर वट एवर रीजन, मकान मालिक को जरूरत है, तो फिर उनका मन वो खराब हो जाता है। तो उन्होंने पिछले 3-4 बार में खरीदने का भी सोचा था, अरे खरीद लेते हैं यार, ये बार बार टेंशन हो रही है। तो आई सेड आई एग्री विथ यू, द लॉजिक इज राइट। अगर आपको परेशानी हो रही है, घर वालों को परेशानी हो रही है, यू शुड बाय इट, राइट। तो तो मैं ये नहीं बोल सकता कि अरे वो तो इतने सेंसिबल आदमी है, स्टॉक मार्केट में इतना रिटर्न बना रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं। और 4-5 करोड़ का घर आता है अंधेरी में, आपकी सारी कंपाउंडिंग टूट जाएगी, उनका जितना भी स्टॉक का पोर्टफोलियो होगा उनको बेचना पड़ेगा। एक चीज जरूर फायदा है, मैं आपको कहना चाहूंगा, आई एम नॉट श्योर मेनी पीपल नो, एटलीस्ट अ टिप एंड हैक आई वुड लाइक टू गिव यू इज कि स्टार्ट डूइंग योर म्यूचुअल फंड, एसआईपी या स्टॉक में आप जो इन्वेस्ट करते हो करो, उसे कॉर्पस बना लो। जब कभी आपको हाउस खरीदना है, आप वो कैपिटल गेन्स करोगे तो आपको कैपिटल गेन्स लगेगा नहीं म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में, अप टू 10 CR। तो सपोज आपने 4-5 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, और अब आप पूरा 5 करोड़ बेच के घर खरीदे हो, तो पूरा 5 करोड़ पे आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा इफ यू बाय दैट हाउस, फर्स्ट हाउस फॉर योर्स। तो फ्रॉम दैट एंगल ऑल्सो इट इज मेकिंग सेंस कि जो भी आज तक आपने कैपिटल गेन कमाया वो सब यूज हो रहा है आपका। तो आई सेड यस, इट्स अ लॉजिकल सेंस, यू शुड बाय हाउस। तो अभी वो जाके खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो भी इन्होंने दोनों तीनों चारों घर लिए हैं, वहां पे कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं हुआ, राइट। अभी भी वो जो रेंटल घर पे रह रहे थे ना, वहाँ कुछ ना कुछ घर में उनको इश्यूज आ रहे थे, बीमार हो रहे थे लोग, तो उनको एक वो मन में भी लगता है यार ये क्या हो रहा है। तो जब एक बार मन में कहीं वहम या कुछ आ जाता है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, कितना भी आम और आप पॉडकास्ट करके समझा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपके माइंड में वो एक एक पॉइंट आ गया तो आई फेल्ट कि यस, यू शुड बाय। बट माय लॉजिक ऑलवेज हैज बीन समहाउ, पता नहीं, कि आई शुड ओनली बाय व्हेन आई एम रेडी फॉर माय ड्रीम हाउस। मतलब नॉट जस्ट कॉम्प्रोमाइज करना है कि अरे खरीदना है बोल के खरीद लो। क्योंकि इफ आई एम नाउ नोइंग कि मुझे लाइफ लॉन्ग या कुछ अच्छे टाइम के लिए बिताना है, तो आई वुड लाइक टू गो इन हाउस वेयर आई गेट अमेजिंग वाइब्स एंड दिस थिंग, एंड नॉट हैव टू कॉम्प्रोमाइज फॉर मनी कि अरे 2 करोड़ कम थे तो अब ये ले लो, उपाय नहीं है। आई वुड नॉट लाइक टू गो फॉर दैट पर्सनली, बट everybody has their own thing. Luckily for me, in last 20 years, I've never had problems with my rental houses. Every year I've stayed there for 5 years. And मैंने ही मकान मालिक को बोला कि मुझे नेक्स्ट हाउस में जाना है, मतलब मुझे अब इस हाउस में नहीं रहना है, बिकॉज आई वांट टू अपग्रेड माई सेल्फ। होपफुली एक और बेट लेना है, देखते हैं कब, जब एक और नए घर में जाएंगे, आई डोंट नो व्हेन, बट दैट विल बी द लास्ट रेंटल हाउस। नो, आई एम नॉट सेइंग रेंटल हाउस, at least as of now that will be the last house in Bombay where I want to go as of today's this thing। 5-10 साल उसमें बिताना है, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। 15 साल के आगे की प्लानिंग तो पता नहीं है। बट कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया मुझे, मतलब मेरे फैमिली को या हमारे लिए कभी प्रेशर नहीं आया कि घर खरीदना है। तो करेक्ट। सो फाइनली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर ओन कंफर्ट लेवल कि आपको क्या कंफर्ट आ रहा है। बट सर्टेनली आई बिलीव कि फाइनेंसिस को खराब करके इमोशंस को सपोर्ट करना भी समझदारी नहीं है, कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति एकदम सपोर्ट नहीं करेगी और बट इमोशनली फिर भी आप जा रहे हो, तो वो आपको आगे जाके बैकफायर कर सकती है। यू हैव टू ट्राई एंड सी अ बैलेंस बिटवीन द टू। करेक्ट करेक्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Striking a balance between personal, emotional, and financial यस, aspect is very यस, important, यस, right? एब्सोल्युटली। यस, Ultimately, like it might differ from person to person depending upon करेक्ट, circumstances and scenarios he deals with. करेक्ट, यस। So I would say thank you so much, Gajendra. Your thoughts, the way you're putting out your points with classic examples, real life practical examples, conceptual understanding, all that was really very great, I would say. Because most of the times what happens, people just tend to tell about that logic, like with no examples. I think like you have dealt with their own experiences and that has come out of that, right? Because going through your own experiences makes you so much tough and so much like conceptually like oriented. And when you tend to discuss that with someone outside, that clearly comes on the face and the voice. Thank you so much for that. I would really say our audience and even the audience would also agree to that point. And I would say my personal words also. The way you are trying to put in the things, Ajendra, that's quite fascinating. Matlab, the crux of it, right? A few of the times we might feel that the answers were a bit long, right? But the thing was, that was something which was fruitful for us. ठीक है, the podcast might be lengthy for the audience, right? But the thing is, the grasp or the knowledge that we are gaining out of this, जो सार है पूरे इतने सालों का, that I am learning from you, my audience is learning from you, the people on the global platform are learning from you.
And you being so humble, like the way you are talking with us and answering our questions, queries, all the examples, that's really great. Thank you so much for being here. Thank you so much. It's completely our pleasure. My pleasure to Mario for inviting me, and I hope our viewers find some wisdom from this, and if they could apply it in life and see the benefits, then I think this Sunday mornings would be well worth spent. Definitely, they will be. Definitely. Thank you so much, Gajendra. Thank you so much.